Hello everyone. So we are starting with the new topic that is fundamental analysis. Fundamental analysis will be discussing in detail where I'll be talking about EIC approach, that is economy, industry and company analysis or company approach. Basically, in this part of the video, I'll be covering the economy analysis and the bit about industry and company analysis. So let us start with the topic. So see, fundamental analysis is a part of security analysis. So security analysis, basically we have three parts. So security analysis is what? Security analysis means where we are analyzing the securities or we are doing the valuation of securities based on its risk and return or other factors. The security can be in terms of equity shares, it could be in terms of bonds, debentures. So security analysis is including fundamental analysis, which is our main topic, technical analysis, and that is efficient market hypothesis. So we'll be discussing it. So see, what is the meaning of security analysis? Like I told you, security analysis is the process of analyzing available securities in terms of return, risk, and other salient characteristics. It also covers the aspect of security valuation, wherein we calculate the fair price or intrinsic value of a security. Now, what is fair price and intrinsic value? See, fair price is nothing but fair price is more subjective. Subjective means it is just like an open rate market or open market rate between buyer and seller. Intrinsic value basically shows the लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ऑफ द शेयर. ठीक है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे वेन एवर आई विल बी टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस. तो इंट्रिंसिक वैल्यू फोकस इज ऑन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, तो उसके बेसिस पर हम उसका प्राइस कैसे प्रिडिक्ट करते हैं या क्या प्राइस होना चाहिए, so that would be intrinsic value. And fair price is more of a current market price which is you can say reflects the current market realities. ठीक है, तो इक्विटी एनालिसिस अगर हम इसमें करते हैं तो इक्विटी एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ इक्विटी शेयर इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड रिटर्न. तो जो भी मैंने आपको बताया. नाउ आई टोल्ड यू सिक्योरिटी एनालिसिस वी हैव थ्री पार्ट्स: फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस. इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस एंड उसमें भी हमारा ईआईसी अप्रोच होता है, तो उसका भी हम सिर्फ कौन सा पार्ट डिस्कस करेंगे, इकोनॉमी का. But before moving on to economy analysis, let us discuss a bit about fundamental, technical, and efficient market hypothesis. So, see, what is fundamental analysis? Fundamental analysis is basically, you can say, it is a long-term analysis of the company where हम क्या करते हैं? We try to find out the fair value and the intrinsic value of the share. अभी मैंने आपको बताया फेयर वैल्यू और फेयर प्राइस क्या होता है, जो बेसिकली अभी एक ऑब्जेक्टिव प्राइस जो मार्केट में भी एक एसेट का या सिक्योरिटी का हो सकता है, एंड वो प्राइस जो बायर्स और सेलर्स विलिंग है टू यू कैन से टू डील विद. ठीक है, और जो फेयर वैल्यू होता है ये बेसिकली रिफ्लेक्ट क्या करता है, अभी करंट मार्केट रियलिटी या सिनेरियो क्या चल रहा है, भाई उसके बेसिस पर सिक्योरिटी का क्या प्राइस होना चाहिए. बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शेयर्स का जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो काफी अच्छा होता है, तो उसके बेसिस पर फ्यूचर उसका हम कहते हैं कि फ्यूचर जो रियलिटीज हैं या फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस सिक्योरिटी से बहुत ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू को हम आज प्रेडिक्ट करते हैं, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू. इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली अगर आप कहेंगे तो ये ट्रू वर्थ शो करता है कंपनी की. ट्रू वर्थ मीन डिपेंडिंग अपॉन इट्स फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट्स. तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज दैट एंड फेयर वैल्यू इज मोर ऑफ अ करंट मार्केट प्राइस, दैट इज अ फेयर वैल्यू जो आगे उसका प्राइस होना चाहिए. तो बेसिकली वी ट्राई टू फाइंड कि लॉन्ग टर्म में या लॉन्ग रन में फेयर वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू सेम होगी, बट हो सकता है ड्यूरिंग दिस शॉर्ट टर्म टेन्योर दीज टू वैल्यूज वुड बी डिफरेंट. बाय बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू जो हमारा होता है वो फोकस करता है कंपनी के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल पे, और जो फेयर मार्केट वैल्यू होता है वो किसको रिफ्लेक्ट करता है, करंट मार्केट रियलिटीज को. तो देखिए इसमें लिखा हुआ है फंडामेंटल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट in the long run true or fair value of equity share is equal to its intrinsic value. भाई लॉन्ग टर्म में दोनों इक्वल हो जाएंगे. अब इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने आपको बताया किस पे फोकस करता है, एक फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल. इट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज फ्रॉम द शेयर, मे बी इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, या जो उसका प्राइस कैपिटल अप्रिशिएट बढ़ेगा, ये प्राइस बढ़ेगा तो उसके बेसिस पे.
अगर इंट्रिंसिक वैल्यू, इफ द इंट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, भाई मैं कहता हूँ जो उसकी ट्रू वैल्यू है, यू कैन से जो ट्रू वर्थ है शेयर की, वो बड़ी है अभी करंट मार्केट प्राइस से, तो शेयर इज अंडर प्राइस, ठीक है, एंड हेंस अ गुड बाय। तो बेसिकली क्या है कि इंट्रिंसिक वैल्यू भाई जो उसकी कंपनी की ट्रू वर्थ है वो ज्यादा दिख रही है, और मार्केट प्राइस अभी कम है, करंट मार्केट प्राइस अभी कम है, तो इसका मतलब वो शेयर अभी अंडर प्राइस है, तो इन्वेस्टर शुड बाय। लेकिन अगर ये उल्टा हुआ, अपोजिट हुआ, तो वेयर द इंट्रिंसिक वैल्यू इज लो बट द करंट मार्केट प्राइस इज हाई, भाई मैं कहता हूँ कंपनी की ट्रू वर्थ तो कम शो कर रही है रेट, लेकिन अभी मार्केट में प्राइस क्या है, थोड़ा ज्यादा है, तो इट मीन्स द शेयर इज ओवर प्राइस। तो आपको अगर अभी मार्केट में रेट ज्यादा है तो यू शुड सेल। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है ऑन दी अदर हैंड, इफ द इंट्रिंसिक वैल्यू इज लेस देन द करंट प्राइस ऑफ द शेयर, इट इज ओवर प्राइस एंड हेंस अ गुड सेल। तो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस हमें हेल्प करता है टू फाइंड आउट वेदर द सिक्योरिटी इज अंडर प्राइस और ओवर वैल्यूड। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है द फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज फ्रॉम अ शेयर depends upon a wide array of factors, including company's performance and future prospects. Fundamental analysis is used primarily to identify securities that are mispriced, that is, they are undervalued or overvalued. तो ये हमें फंडामेंटल एनालिसिस बताता है। अभी मैं अभी आपको इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस का मीनिंग बताता हूँ, देन अगेन विल मूव ऑन टू फंडामेंटल एनालिसिस वेयर विल बी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी एनालिसिस। तो सी द सेकंड टर्म्स कम इज टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या करता है, हमें शॉर्ट टर्म वैल्यूएशंस प्रोवाइड करता है, और जैसे मैंने आपको बताया फंडामेंटल एनालिसिस हमें किस चीज में हेल्प करता है, वेदर द शेयर इज अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस देखिए दो चीजें आप इसमें फोकस कीजिए। टेक्निकल एनालिसिस आपको बताता है व्हेन इज द राइट टाइम टू बाय एंड राइट टाइम टू सेल, फर्स्ट पॉइंट, और ये कौन से इंटरवल्स में बताएगा, शॉर्ट टर्म में, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस क्या यूज करता है, टेक्निकल एनालिसिस मोस्टली यूज द हिस्टोरिकल प्राइजेस जो पास्ट प्राइजेस थे, और वॉल्यूम ऑफ डेटा, वॉल्यूम ऑफ डेटा मतलब कितना सिक्योरिटी में बाय और सेल हुआ। तो बेसिकली जो टेक्निकल एनालिसिस है ये हमें शॉर्ट टर्म व्यू प्रोवाइड करता है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इसके अंदर बेसिकली जब हम, मैं आपको आगे प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे, तो हम चार्ट्स का ज्यादा यूज करते हैं। तो अभी मैं इसमें आपको सिर्फ मीनिंग बता रहा हूँ, वेयर आई टोल्ड यू दैट technical analysis focuses on short-term evaluation and where it takes into consideration past prices and volume of data, and it helps us to find out when is the right time to buy or sell. तो देखिए यहाँ यही लिखा हुआ है, technical analysis is based on the premise that history repeats itself, hence future price movements can be well predicted on the basis of past price and volume data. Technical analysts are therefore called chartists because they study various charts and patterns to predict what the price should be. Technical analysis is done on the basis of the trend analysis of past prices. Technical analysis is used primarily to time the market, that is identifying right time to buy or sell. It must be noted that technical analysis predicts future prices over a short period of time and hence may not be useful for long-term investors who just wants to buy and hold the securities. तो अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो इट वुड बी फंडामेंटल एनालिसिस, but whenever you are talking about short period of time, so it's a part of technical analysis. तो आई होप आपको फंडामेंटल और टेक्निकल में थोड़ा सा डिफरेंस तो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। So let us move on to the next part. So this is basically efficient market hypothesis. So what is efficient market hypothesis? See, efficient market hypothesis basically it was led by Eugene Fama, ठीक है, where it is believed that share prices at any time can reflect their intrinsic value. It means anytime the share value can reflect their, you can say, true worth. और true worth कैसे होगा, which is based on the future cash inflows. तो जो share price होता है they can anytime reflect the true intrinsic value, but कौन से बेसिस पर इट वुड बी चेक, इट वुड बी चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ available information in the market. So they have categorized this into three parts, that is weak form, semi-strong form and strong form. Again, the basis of this bifurcation is
available information. So let us see. The proponents of EMH, led by Eugene Fama in 1970, believed that share prices at any time reflect their true intrinsic value, and hence all available information is already reflected in the market price of the share. If the available all available information is reflected in the market price of the share, so it is the flow of net information which changes share price. However, the extent to which information is reflected in the security prices and the speed of adjustment determines what is called the level of market efficiency. ठीक है, तो basically for example the information about the company or the share is available in the market, and how quickly that information, basically you can say how quickly the prices are adjusted towards that information. For example, there can be an information that the security or the share, or you can say the company is declaring a dividend. For example, this news is out. So the moment this news is out, how the stock markets have behaved, because whenever the dividend is out, so shareholder expectations increases because their returns are increasing. So whether the price of the security have increased or there is no much in not much increase, so that would be that what they are saying, that however the extent to which information is reflected in the security prices and the speed of adjustment determines what is called level of market efficiency. Pharma 1970 has suggested three levels of market efficiency depending upon the extent to which information is reflected in the share prices. अब बेसिकली क्या है, मैंने आपको बताया द मेन aim, or you can say the main category where you bifurcate these three forms is available information and how they have adjusted in the market price. If it is not adjusted quickly, weak form, ठीक है, sorry, and if it is adjusted partially, semi strong, and if it has adjusted quickly, so that would be strong form. Again, I have made a full video on this high efficient market hypothesis. This would come after the all fundamental analysis and technical analysis. So we are moving, you can say, step by step from fundamental to technical, technical to then efficient market hypothesis. So this part of the video is over here. In the next video, we'll be talking about the economy analysis of the fundamental part, which is known as EIC approach. So please watch out all the videos in the playlist. Thank you so much. Please like, subscribe, and share our channel, and also hit the like button so that you can get the all notifications of the new video which is uploaded. Thank you so much.